नियत जो लोग कत्ल करते हैं उनको कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है किसी चीज का। तो इस दुनिया में तो चलें वो शायद कानून की गिरफ्त में ना आए, मगर आखिरत में क्या करेंगे? मतलब आखिरत में क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे? तो देखिए ये स्टेट को भी ये जो माइंडसेट है उसको चेंज करना होगा। ये कोई कोर्ट एक फैसले करके कुछ नहीं कर सकती है। That's right. जब तक ये पूरा मशीनरी इस माइंडसेट को चेंज ना करे। और जी ये पता नहीं क्या करने आ रहे हैं। अब आपने बलूचिस्तान में भी लोगों को कत्ल किया जा रहा है एथनिसिटी ग्राउंड पे। देखिए ये कोई सलूशन आज तक किसी ने कोई कत्ल और गारत से कुछ पाया नहीं है। तो भाई कोई जेन्युइन आपकी बात है, आप आइए पॉलिटिकल सिस्टम में इलेक्शन करवाइए। जब इलेक्शन हुए थे लास्ट वाले में था चीफ जस्टिस बलूचिस्तान में, बड़ी मुश्किल से हमने सारे इलेक्शन कराए और कुछ एलिमेंट्स नहीं चाहते थे इलेक्शन हो, because they don't want Pakistan strong. So we have to see what to do. ये एक अखबार की सुर्खी लगी, ऑर्डर पास हुआ, इससे कुछ नहीं होगा। I think the state needs to be definite inclusive. statement should be given by you in writing by the government. ये कमीशन जो था मिसिंग पर्संस का, ये वजूद में है या नहीं है? है सर, है। कौन हेड कर रहा है? It is being headed by Justice retired Javed Iqbal. How old is he now? He retired from this court in 2011. 11. So he should be now what, 77, 78, 77. आप आए हुए वहाँ से, कमीशन से आए हैं? रजिस्ट्रार हैं आप कमीशन तो आप सामने आइए। ये कितने लोग हैं इस कमीशन के मेंबरान? सर यहाँ पे जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं और साहब शरीफ विर्क साहब रिटायर्ड, शरीफ विर्क साहब, मोहम्मद शरीफ विर्क, मोहम्मद शरीफ विर्क। ये कौन है? ये रिटायर्ड आईजी है जी। और कोयटा में है हमारे जस्टिस अमानुल्लाह खान यासीन जई जी। ये वॉलंटरी है या इनको तनख्वाह मिलती है? सर तनख्वाह मिलती है सर, तनख्वाह मिलती है सर। सेक्रेटेरिएट है पूरा। कितना आपका बजट कितना है? सर मैं अंदाजा नहीं पता होगा सेक्रेटरी को ही, मुझे पता नहीं। मेरा ख्याल 4-5 करोड़ का होगा। तो आप करते क्या हैं? सर रजिस्ट्रार हूँ सर मैं कमीशन का। नहीं तो ये बस ये सर तनख्वाह लेने के लिए कमीशन है या कोई और काम भी कर रहा है? नहीं काम करता है सर कमीशन वाला, पता है ना। कराची में हमारे जस्टिस आपकी एनुअल रिपोर्ट आप जारी करते हैं, मंथली करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, मंथली भी करते हैं। कितनी रिकवरी कराई है आपने आज तक? तो बड़ी माशाल्लाह अच्छी। तो हमने बलूचिस्तान में रिकवर की, वो भी आप अपने पास डाल देते हैं कि हमने रिकवर किया है। फिर नहीं, कितनी रिकवरी मंथली, क्या है रेशियो आपका रिकवरी का? मैं अभी आप पर्सन्स का ये बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट जनाब को देता हूँ। लेटेस्ट नहीं, वैसे ही बता दीजिए ना, महीने में कितने रिकवर करा, कितनी दफा मीटिंग है? बता देता हूँ। नहीं बात सुने, आपकी मीटिंग महीने में कितनी दफा? डेली होती है सर। क्या डेली होती है? डेली होती है, उसमें लोग आते हैं, मुतासिरीन के घर वाले, सारे सब डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो फिर रिकवरी कितनी होती है महीने में, क्या एवरेज है? यही मैं करने लगा हूँ सर। इस महीने में हमारे 46 जो है ना ये डिस्पोज ऑफ हुए, ये रिकवर हुए हैं हमारे यहाँ। और 46 का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, रिकवर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। अंग्रेजी के दो मुख्तलिफ लफ्ज हैं सर। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं आप? सर ट्रेस्ड कह रहे हैं। ट्रेस्ड आपकी रिपोर्ट किधर है? ये है ना, ये कागज का टुकड़ा है, दिखाइए क्या चीज है। 91 देखते वो सारा दिया हुआ जो इनके मुताबिक देखते हैं। नहीं ये तो कुछ भी नहीं है ना, किसी का नाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो बाकी ये लिखा है कि आप आज कितने मिसिंग पर्सन्स हैं आपके रिकॉर्ड में? ये लिखी हुई फिगर टॉप पे ना, बता दीजिए ना। ये जो टर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं, केसेस डिस्पोज्ड ऑफ अप टू दिसंबर 2022 7001, डिस्पोज ऑफ से क्या मुराद है भाई? या रिकवर हुए या नहीं हुए? सर मैं मुख्तलिफ किस्म आपके पास कैटेगरी होनी चाहिए ना। देखें जब रिकवर होते हैं, बहुत से वो रिकवर होते हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस होते हैं, वो बता देते हैं फलाने केस में कस्टडी में। असल में सर ये 4 तो ये इसका मतलब ये है
रिपोर्ट इसमें नहीं है ना जो अब आजकल मिसिंग पर्सन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? तो वो तो हमें नहीं पता, हमारे पास जो केस आता है उसका पता होता है हमें। आपसे यही तो पूछ रहे हैं, आपके पास आजकल केसेस आ रहे हैं? ये आ रहे हैं सर। आपका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? सर ये G91 में सर। हाँ? G91। ये क्या घर है? नहीं सर, ये सिविल डिफेंस बिल्डिंग है सर। अच्छा, उसके अंदर है। नहीं तो आपके पास फॉर इंस्टेंस दिसंबर 2023 में कितनी केसेस आए हैं फ्रेश? सर ये बताने लगा 46 केस आए हैं सर। फ्रेश? जी फ्रेश। अच्छा, इनका क्या बना? सर ये प्रोसेस शुरू कर दिए ना इसका हमारा। उससे पहले हम JIT बनवाते हैं, उसके बाद JIT क्या चीज है? सर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। क्या चीज है बताएं, कौन होता है उसका मेंबर? उसमें SSP इन्वेस्टिगेशन होते हैं और साथ में रैप होते हैं IB के, ISI के, MI के और होम डिपार्टमेंट के। इसके 5-6 लोग। ये आप बताएं, ये मिस जंजू आप गई इस कमीशन के सामने? यस माय लॉर्ड, जब ये बना था 2011 आप में। इससे मुतमईन हैं या नहीं मुतमईन हैं? मुतमईन नहीं है हम लोग। हम और, लोग से मुराद हम और तमाम जो विक्टिम्स हैं जो वहाँ पे पेश होते आप भी केस में हैं? इसमें आपके साथ इनाम साहब जो खड़े, आप भी इस केस में हैं? I'm assisting, madam. I'm working with her, sir. ये आप मुतमईन हैं इस कमीशन से? Not at all, sir. ये हाँ? Not at all. कोई sir. मुतमईन नहीं है, sir. Dispose of किए हैं. Honorable ने बड़ा नहीं, एक सेकेंड, तो लंबी बात नहीं करें। आप मुतमईन हैं या नहीं हैं? Dispose of जो है इसमें आप सिर्फ हाँ या ना बता दें। Satisfied, sir. बस एक सेकेंड, एतजाज साहब आप मुतमईन हैं इस कमीशन से? नहीं नहीं बस सिर्फ पूछ रहे मुतमईन है या नहीं मुतमईन है? नहीं नहीं, मुतमईन है या नहीं मुतमईन? हद तक है। नहीं सवाल से भी मुतमईन, बस ओके। अच्छा, एक रजिस्टर ये यहाँ जो आज जो केसेस हैं, कोई मुतमईन है कमीशन से या नहीं है? नहीं है सर। मैं भी नहीं, कोई मुतमईन नहीं। अच्छा, ये 2023 तक आपने 10,088 केस लिखे हैं। ये कब से शुरू हुए हैं 10,088? सर ये टोटल हो गए जो हमारे पास। मेरा सवाल सुने। 2011 से सर। सुने, आप देखिए, रजिस्ट्रार हैं, आपके पास माय लॉर्ड जो पूछ आप रहे हैं ना, रजिस्ट्रार हैं, आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर होने चाहिए। देखिए एक नंबर से हमें दिलचस्पी नहीं है, हमें नाम से है। ठीक है, फला शख्स मिसिंग हुआ इस तारीख को, आपके पास रिपोर्ट आई इस तारीख को, ठीक है, वो उस वक्त का जमाना मतलब ईयर हमें पता चलेगा ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उधर जाती है। तो ऐसा डेटा आपके पास है? जी है, बल्कि हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया सारा। सुने ना, आपने ये कॉस्मेटिक वैल्यू ऐसी रिपोर्ट बनी हुई है, आपने लिख दिया है टोटल नंबर ऑफ केसेस अप टू दिसंबर 2023 10,088। ये 10,000 कब से शुरू हुए हैं ये केसेस? ये अब इनके हस्बैंड तो सर ये पहले मैं अर्ज करता हूँ, ये पहले एक कमीशन एक बनाया था सुप्रीम कोर्ट आपको ईयरली बनानी चाहिए ना, जो पिछला डिस्पोज हो गया, बैकलॉग पूरा लेके चल रहा है। आप यही नहीं पता 10,000 केस कब से पेंडिंग है आपके नहीं पास? सर, इस पेंडिंग वो लिखे हुए नीचे, जो पेंडिंग इस वक्त है वो भी नीचे लिखे अच्छा, हुए। ये 3 लोगों का कमीशन है, मोहम्मद शरीफ विर्क, अमानुल्लाह यासीन जई साहब और जावेद इकबाल साहब। और जस्टिस ज़िया परवेज साहब कराची में है। और कौन? जस्टिस ज़िया परवेज साहब कराची में है। और डेली असेंबल होते हैं, कैसे आते हैं कराची से? नहीं, वो कराची में करते हैं, उसी के केसेस वहाँ करते हैं। अलग अलग करता है, अलग अलग बलूचिस्तान के जो है वो कोयटा में होते अच्छा, हैं। और रिकॉर्ड रखते हैं आप? खैबर पख्तूनख्वा के कौन है? वो इस्लामाबाद से ही जाते हैं, हमारे जय साहब जाते हैं या शरीफ विर्क साहब जाते हैं। और पंजाब से? पंजाब में भी, पंजाब और फ्रंटियर। यही मेंबर हैं फिर? जी 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 5 लोग हैं, 4 लोग हैं जी। हाँ, 4 हो गए जी, बिल्कुल। Are they paid or are they voluntary work? ये सब पे होता है सर, पे करते हैं सर। अब जो हाई कोर्ट के जजेस रिटायर हैं, उनको हाई कोर्ट का पैकेज जो होता है वो मिलते हैं। अच्छा, तो वो तो उनको पेंशन मिलती है वैसे ही। पेंशन तो लेता है ना सर। नहीं तो जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर है उनको सुप्रीम कोर्ट की तनख्वाह है, जो हाई कोर्ट से रिटायर है उनको हाई कोर्ट की तनख्वाह है, यही है। उनको क्यों मिलती है तनख्वाह? के अलावा क्यों क्या जवाब? नहीं मतलब समझ नहीं आ रही बात। हाँ जी, ये अटॉर्नी जनरल साहब से। उनका पैकेज तो वही होता है ना, जो वो लास्ट अटॉर्नी जनरल सर्विस कर रहे होते हैं। अटॉर्नी जनरल, do you know anything about the commission? My lord, I do not, and it's a bit of a news for me that they are paid, but I don't know if the presidential order permits such payments or not. I'd have to look up.
the presidential order related to the terms and conditions of judges. थोड़ा सा जोर से बोलिए. I'd have to look up the presidential order on the terms and conditions of judges. It is Whether quite post-retirement can they, if they are required to do any work. वो आप जो बात कर रहे हैं, दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस. कोई भी रिटायर होता है जब नई जगह जाता है उसको वही पैसे मिलते हैं. हाई कोर्ट से है तो हाई कोर्ट की है, एमलमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है. दिस इज एन एडिशन टू द पेंशन. Right. So I was not No, aware, but there is another order, I'm aware of it, that if a government gives an assignment to a retired judge, That's what I was. they cannot be paid. That's what I was. I don't know what that order is, because recently something came before me that naturally if they're doing a private arbitration, that's something else. But if a government assignment, then you're not paid for that. That is part. वो कौन सा ऑर्डर है? ये तो कह रहे हैं इनका बड़ा बजट भी है. आपसे ये कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे आता है? इंटीरियर सर. नहीं, इनसे पूछ रहे हैं आप कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं? वैसे बजट हमारा थ्रू इंटीरियर आता है, अदरवाइज कमिश्नर इंडिपेंडेंट ही है. इंडिपेंडेंट अलग बात होती है, और गवर्नमेंट में किसी जगह तो आपको बजट जाता होगा ना, इंटीरियर में, फाइनेंस में, किस में, ह्यूमन राइट्स में, लॉ में, किधर ऑफ इंटीरियर आता है बजट हमारा. अभी हमारी एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन इस वक्त किया है कैबिनेट ने. आपको कुछ पता है इसके मुतालिक? खोसर साहब आप कुछ जिक्र कर रहे थे अभी. विजिट भी किया है. वो आपकी इस प्रेमिसेस से बड़ी एस्टैब्लिशमेंट है उनकी. बजट और अखराजात जो है वो हमने लिखा है कि जरा मंगवा लीजिएगा. कहाँ लिखा है आपने? आपको पता है? पिटीशन में मैं चूंकि वकील हूँ ना जी इस पे. अच्छा. ये आसन की पिटीशन मैंने दायर की है. अच्छा. मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. अच्छा. वो जरा मंगवा लीजिएगा सारा. आज तक जो कुछ इन्होंने एक्सपेंडिचर हुआ है, मीटिंग वगैरह जो करते हैं, बिल्कुल एक्सचेकर पर जो लगा है और उनकी आउटपुट क्या है. स्टार बनाया हुआ. ये कौन से केसेस जो क्लोज हुए हैं रजिस्ट्रार साहब? क्या आप ये अपॉइंट कैसे हुए? कमीशन को नोटिफिकेशन हुई है? जी जी, my lord, it was appointed under Commission of Inquiry Act 1956 in 2011. Forever? जी, वो फिर एक्सटेंशन हो रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम. वो नोटिफिकेशन है आपके पास? ये रजिस्ट्रार आपका नाम क्या है? खालिद नसीम मेरा नाम है. खालिद साहब, आपके पास नोटिफिकेशन है जिसके तहत ये चल रहा है? खालिद नसीम साहब है ना आपका नाम? जी. वो कौन सी नोटिफिकेशन है जिसके तहत आप बने हैं? My lord, this is SRO 149 था 134 of which file? ये है. My lord, I have this copy of the कह रहे हैं हमारे पास है. कौन सी ये फाइल बताएं आप जरा, नंबर बताइए फाइल का. दे दे दोनों. 161 देना, मुझे देना जरा. उनका उसका कौन से पेज पे? उसके किस पेज पे? अच्छा, ये गजेट नोटिफिकेशन है. My lord, मेरी ये जो जरा पढ़ ले आप. कैन यू रीड इट? आप जरा पढ़ ले नोटिफिकेशन. My lord, this is SRO 149 of 2011 dated 1st March 2011. Whereas on expiry of period allowed to the Commission of Inquiry on enforced disappearances, 136 cases of prima facie enforced disappearances are still untraced, and some new cases have also been received. And whereas the federal government is of the opinion that it is necessary in the public interest to appoint a Commission of Inquiry to look into all facts of the matter and to make efforts to trace the whereabouts of missing persons. Now therefore, in exercise of the powers conferred by subsection 1 of section 3 and subsection 1 of section 5 of the Pakistan Commissions of Inquiry Act 1956, the federal government is pleased to appoint a commission of inquiry consisting of following namely Mr. Justice Fazlur Rahman, Chairman, former Judge of Baluchistan High Court, Mr. Muhammad Sharif Virk, IGP retired, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar member. ये पेमेंट की किधर है बात? बजट और ये. The Commission of Inquiry shall have the following terms of reference, namely. ये तो 136 लोगों के लिए बनाया गया था कमीशन. प्लस कर दिया है टू ट्रेस वेयर अबाउट 30 इनटू. वो तो शुरू में होगा 2136 होंगे. अच्छा, फिर इसका वो किधर है पैसे? My lord, it's I mean, there's only this Commission will have it its says that independent huh? secretariat with auxiliary staff. That's all it says.
Are you satisfied with the working of the? ये इधर फैसल सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, जरा आइए. I think you've done some work on missing persons. Are you in this case? No, I'm not, sir. So you have done some work on missing persons? Yes, my lord, I am. Do you know anything about this commission? Yes, sir. Please explain it. Yes. ये 6 महीने के लिए ये कमीशन बना था तो रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, वो बढ़ा देते हैं. जी. Initially it was made for 6 months only. Yeah, my lord, it was for Kamal Mansoor Alam, जो कि 136 persons My lord, and for 6 months. Exactly. Unless extended by further orders. तो वो extend होते वो that is now कब बना है 2011 में. नहीं, tell us. आप हमें बताएं जरा, ज़बानी बताएं. Sir, this is a commission which was formed in 2010. The only comprehensive report submitted by the commission was submitted by the first commission, which was headed by Kamal Mansoor Alam Sahab. If your lordship may see the paper book on page 1, I've attached a copy of that commission, and my lord, if your lordships go through that contains really most of the answers to this issue. Which? Sir, page 1. जी, headed by Justice Kamal Mansoor Alam. Yes. Retired थे ना? जी. Retired, as your lordship is, he was illegally removed by Pervez Musharraf. He was illegally removed by Pervez Musharraf in 2000, sir. He was a Supreme Court judge. PCO came, he refused to take the oath. Achha, okay. No, then he was a Supreme Court judge when he was heading the commission, or he was? No, he was retired, sir. And there were 3 members. And this is the kind of report. It's a very detailed. अगर आप इंडेक्स ही देख लीजिएगा, जो आप बात कर रहे थे कि इंडिविजुअल केसेस के हवाले से क्या हुआ, उस पे क्या रिकमेंडेशन हुई, उस पे क्या कॉम्पनसेशन अवार्ड हुई, वो इस रिपोर्ट में दी गई है. I would not attach the entire report, sir, with the annexures, but I'll place that before your lordships. Or then it was substituted by Justice Javed Iqbal. Sir, this commission's recommendations, there are very important recommendations in this. Where? Page? Sir, if your lordships may kindly see. रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल थी, ये पब्लिक कब हुई है? सर, ये फिर पब्लिक तो नहीं हुई, लेकिन ये कॉपीज हैव बीन सर्कुलेटिंग, सर. खुद अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है. कॉपीज कौन सा? सर, पेज अगर आप 38 देख लीजिए काइंडली. अगर आप पहले सर, अगर काइंडली पहले 27 देख लें. ये तो जो इनकी फाइनल प्रोसीजर रिकमेंडेशंस इनके हैं पैराग्राफ 57 पेज 40 के ऊपर, वो तो इन इफेक्ट करते ही है ना. जेआईटी तो बना दी इन लोगों ने हर चीज में. तो मेन प्रॉब्लम कमीशन का ये है, और ये सेक्रेटरी साहब इसको रिकन्फर्म करेंगे, is that this of course is not the first time your lordships have taken notice on this issue. Supreme Court has been active on this issue since 2006. The last order which was passed is very important, sir. Page 61 of this paper book. वो critical order, and sir, that is the first suggestion I would give in terms of a resolution to this problem. Page 61. A special implementation bench was created by this court regarding page 61. Relevant पढ़े? जी. Sir, page 61. On the last date of hearing, 26/9/2018, this matter was fixed before a 3-member bench of this court, headed by the Honorable Chief Justice of Pakistan. The operative part of the order passed on the said date is reproduced herein below. After hearing the applicants, we deem it appropriate that a special bench be constituted to supervise the proceedings before the commission, particularly with respect to the cases in which
production orders. Now, मैं ये explain करूँगा थोड़ा सा बाद में sir. Production orders were issued by the Commission, but the same have not been complied with, and monthly reports shall be submitted by the Commission to such special bench for perusal of the honourable members. It also directed that all the matters pertaining to missing persons which come to the Supreme Court be referred to the Commission for adjudication and disposal. This case is to be fixed before the special bench to be constituted by the Chief Justice of Pakistan. It is very much clear from the above order of this court that a direction was issued to the office of this court that all matters/cases relating to missing persons which come to this court shall be referred to the Commission of Inquiry on Enforced Disappearance for adjudication and disposal. Therefore, the office is directed to comply with the direction of this court given in the order dated 26/9/2018 immediately. The Registrar of the Commission on Enforced Disappearance present in court has substituted a report through CMA number so-and-so which is placed on record. Now, this is the critical operative part. However, the Commission on Inquiry on Enforced Disappearance is directed to submit a detailed report regarding the cases so far dealt with by the Commission, i.e. the status of each case, and if the case/cases have been disposed of, details thereof. That's the first direction. The second direction, the Commission shall also submit a separate report regarding the cases where production orders were issued by the Commission, and so far those cases have not been complied with. The requisite report shall reach this office for approval in chambers within 1 month positively. Sir, this notion of production orders under the regulations is critical. When the Commission, after an initial inquiry... I don't understand. If you don't know where a person is, how can you issue production order? Yes. What the Commission does is that it does an investigation, and if it comes to a prima facie opinion on the basis of the evidence that this is a case of enforced disappearance. Now, when the term enforced disappearance is used, my lord, it by definition means that the abduction is by state officials. It can't be a private kidnapping. So when it only issues a production order when it comes to the conclusion that prima facie this is a case of enforced disappearance. Now the Commission... But without knowing the whereabouts, somebody has to say that the custody is with us. Oral evidence hota hai. Now, the reason why the Supreme Court passed this order is, and this will be confirmed by the registrar, is 645 production orders have been issued. ये 2018 का ऑर्डर आपने पढ़ा जी। अब 2024 में है, इसके बाद कुछ हुआ होगा ना? इसके बाद इस केस में जहां तक मुझे मालूम है कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब 750 कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने 2022 में स्टेटमेंट ये दिया था कि 645 प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैव बीन इशूड टू द रेलेवेंट एजेंसीज, ओनली 51 हैव बीन कंप्लाइड विद. इफ योर लॉर्डशिप में काइंडली सी एक प्रोडक्शन ऑर्डर जरा पेज 66 पे देख लीजिए. That is the critical thing, that's the problem with the Commission, is that their orders are not complied with. Page 66. इन्होंने तो ये तो पूरे क्लोज ही कर दिए केस. ये सर वो भी मैं आपको दिखाता हूं. मैंने इनको मार करके दिया है मगर इन्होंने जवाब नहीं दिया. नीचे ये लिखा हुआ है क्लोज ड्यू टू नॉट बीइंग केसेस ऑफ ये पूरी रिपोर्ट नहीं है. इनकम्प्लीट एड्रेस, विड्रॉल बाय कंप्लेंट्स, नॉन प्रोसिक्यूशन. ये पूरी नहीं है. ये जो स्टार स्टेरिक बना हुआ है, मैंने इनसे पूछवाया, कह रहे सारे केस ही बंद हो गए. तो ये पूरे 10,000 केस बंद हो गए. सर पूरी नहीं है, मैं भी आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूं. मैंने पूरी रिपोर्ट पेज 66 अगर देख लीजिए, पढ़ लिया. Since these orders, there are 645. Amna has just informed me that there are now 700. Yet Commission itself has come to the prima facie opinion that this is a case where the relevant officials of the state are involved, and those orders have not been complied with. और हुआ ये उसमें से तो एक one step at a time. जी. Attorney General, मैं आपको रिपोर्ट पूरी देख लूं. Have a look at the production order. जी सर. मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ. सैंपल के तौर पे मैंने रखा है. My lord.
हाँ तो वो कह रही थी, वो तो यही बात कह रही है। ये सही बात है। तो इसका क्या हुआ फिर? रिस्पेक्ट है ना, कुछ रिस्पेक्ट करता है ये। If these production orders, it's a government constituted commission, and the government constituted commission has ordered something, then what happens now? He's saying that these production orders are not being complied with. I think under the Commission of Inquiry Act 2017, the Commission has the powers of contempt. Powers of Judge of Supreme Court, sir. And if वो तो want to ठीक see है if ना, those powers were ever object is exercised. not to send people to jail. No, but The what I'm object saying is to, if the people are illegally detained, to set them Right. free. जी. वो तो बात की बातें हैं। So I'm just आप पनिशमेंट में हम मसले का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। that's right, sir. अगर हम पनिशमेंट में फौरन चले गए तो मसले का हल नहीं होगा। That's right, sir. That's right. No, I'm just with regards to the production orders. I mean, I'd have to check with the Commission what happened. I mean, check this is कर लें। 2020, नहीं, 10 December 2020. So, देखें, what we can, I'm just thinking now aloud, subject to what everyone says, that let the government, because production, you are directed, the government is directed in one form or the other, that you have to give us some response to a production order. That's right, sir. Yes, no, whatever, no, we want to keep him, he's being tried in a court of law. I don't know, whatever the reason is. But it has to solicit a response, some response. Of course, this is not the responsibility of this government, because this, for instance, this production order is dated 2020. Yeah. ठीक है, 10th November 2020. So we don't put the burden on your heads, but at least we want to know what you have to offer. So we will certainly give you time. And ये सारे production orders, if we tell the Commission to provide them to you in a tabulated form, name, parentage, address, whatever, so you can easily traceable, and then you can submit a comprehensive response report, unless you have some better solution. I think that's कमीशन के सामने जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, ये उनके सामने 193 के पावर है उनके पास, और वो अगर इन्फोर्स करा नहीं सकते अपने ऑर्डर्स, तो जो प्रोडक्शन ऑर्डर वो इशू कर रहे हैं, I think what my Lord Chief तो Justice, उनके पास इम्प्लीमेंटेशन का पावर तो है अंडर द 2017 एक्ट। आप बताएं, आप जरा माइक अपनी तरफ कर लें। जी, ये अगर जनाब पेज 29 मेरी पिटीशन जो है, नंबर इसको शायद अभी तक नहीं लगा, हम आपके ऑब्जेक्शंस ओवररूल कर दिए, आप उसी पे अटके हुए। नहीं, मैं ये तजवीज़ देना चाह रहा हूँ इसमें। कौन सा है ये पेज 29? अब नंबर, अच्छा नील, नंबर नहीं लगा, वो नंबर के बारे में 20, हाँ मिल गया जी, उसमें तो आप कमीशन के मेंबर्स लिखे हैं ना, आपने प्रपोज किया है कि ऐसा कमीशन मैंने वो उसकी जस्टिफिकेशन भी दी है, जस्टिफिकेशन भी दी है। पैराग्राफ ग्राउंड एफ है, ये ग्राउंड एफ में जो लाइन 8वीं लाइन है, द पिटिशनर देयरफॉर अर्जेस दिस ऑनरेबल कोर्ट टू सेट अप एन इफेक्टिव एंड पर्पसफुल कमीशन इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स conferred upon this honorable court and Article 187 of the Constitution, Order 32, Rule 1 and 2, read with Order 36 of the Supreme Court Rules 1980, coupled with the principles of Civil Procedure Code, as was done by this honorable court in the case of Watan Party, PLD 2012, Supreme Court, comprising of the following. Now, the ones that I suggest. देखिए Aijaz, we are at the moment in a different point. You are suggesting a reconstitution of the commission. So, yes, it's not that we are disagreeing with you. At the moment, what we are saying is that the commission has apparently done some work.
You may not be satisfied with it, but there are some production orders. So we want to ask the government why have they not been complied with. That's the first thing. Number two, what we want to do from the commission is we want complete details. Just not give us numbers, give us names, etc. And periods is very important, in which period it has happened, because nobody wants to touch it if you put the burden on the present setup. Let's, for want of a better term, use this word, that why am I responsible for everyone? So then we want to break it up into setup. And of course, if you're not satisfied, which there is general dissatisfaction with the working of the commission, then we can call upon the government. They may consider reconstituting the commission. They may not want to reconstitute the commission, but we'll give them an opportunity to consider whether they want to or not want to. We don't want to become the government of Pakistan. सर मैं सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को भी पता हो कि इस जो इनकी कमीशन है जो बनी हुई, इसमें इनहेरेंट डिसेबिलिटीज और डिफेक्ट्स हैं। एजाज साहब, मैं आपको ये अर्ज करता हूं, आप चाहते हैं चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज बने जिसके 2 साल अभी भी रिटायरमेंट में बाकी हो, तो वो तो मुनासिब नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जज के खिलाफ नहीं सर, मैं अर्ज करूं, उसकी वजह यह है ये कमीशन जब भी रिटायर्ड जज को माफ कीजिए कोई नहीं सीरियसली लेगा, ये बड़ा सीरियस मैटर, विद रिस्पेक्ट। Therefore, I propose the chairman should be a sitting judge of the Supreme Court with at least 2 years, ताकि वो 2 साल की tenure में वो कुछ कर सके। आपको पता है कितने केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में? हम ये जो चीजें, या तो फिर वही काम होगा कि वो जज या काम नहीं करेंगे अपना जो काम करना चाहिए, या फिर वो कमीशन का काम नहीं करेंगे। फिर आपका एतराज यही होगा कि जी क्योंकि नॉर्मल डे पे आपको पता है हम लोग को जितना काम होता है वो बड़ी मुश्किल से हम निकाल पाते हैं दिन को, ठीक है? तो वो नंबर ऑफ जजेस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है, कितने बेंचेस हैं आपको पता है, कितने पेंडेंसी है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये भी आपको पता है। तो ये जरूरी तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज में आकर के वो सारी खूबियां आ जाए कि वो कमीशन का काम भी कर ले। ये डेडिकेटेड कमीशन होना चाहिए जो फुल टाइम हो, नॉट पार्ट टाइम। सुप्रीम कोर्ट का जज को आपने बिठा तो दिया तो वो काम करेगा पार्ट टाइम, तो नेचुरली पार्ट टाइम ही कर सकता है, या तो उसको कहे अच्छा आप केसेस ना चलाओ बस यही काम करो। सर इस तरह तो इस वक्त तो हो ही कुछ नहीं रहा ना, वो पार्ट टाइम भी नहीं है, वो फुल टाइम। आपके तवज्जुह से इंशाल्लाह बेहतर करेंगे चीजें, एक दिन में तो नहीं होंगी ना, मगर जरा से ब्रीदिंग स्पेस हम देना चाहते हैं अटॉर्नी जनरल को। जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं, आपने अपॉइंट किया था उनको? जी सर, मैं अब क्या कहें आपको, तो आपकी हुकूमत ने, सॉरी आपने नहीं किया तो अब आपकी हुकूमत है, थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। ये रिक्रिमिनेशन वो अब नहीं छोड़ देना, अब हम थोड़ा सा इनको मौका तो देना कुछ बेहतरी लाने में। मैं मेरा जरा सुन ले जो स्ट्रक्चर में जी। अब आपने जो देखा है ना, इसके आपने जो प्रपोज किया प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान बार, सिविल सोसाइटी, आप जरा सुनिए ना, हमने बहुत दफा तजवीजें मांगी हैं, वो इंडिविजुअल पे होता है। कोई प्रेसिडेंट बहुत इंटरेस्टेड है, कोई प्रेसिडेंट कहता है यार ये क्या मुझे एक काम करना है मुफ्त में, ठीक है? तो वो भी देखें हम, ये बर्डन अब प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बलूचिस्तान, अब ये अगर ये बॉडी मीट ही नहीं करेगी, कभी काम ही नहीं करेगी, डेडिकेटेड लोग होना चाहिए जो कि अगर काम करें। आप असेंबली नहीं कर सकेंगे, इतने सारे मेंबर्स पूरे पाकिस्तान में। कल को कहेगा जी मैं तो रिटायर हो गया, वो एक टर्म का टर्म होता है, हर साल इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शनियरिंग में लग जाते हैं, फिर वो केसेस भी हमारे सामने नहीं कभी चलाते हैं कि जी अब इलेक्शन हो रहा है आप मेरा केस अर्जन कर दें। तो ये इसमें जरा सा हम देखें इत्तेजाज साहब, I am at least very conservative. I want every functionary of the state to do its own job. We want to call upon the government of Pakistan to do its job. If they fail to do its job, then we can certainly take on suggestions on board, and they may agree with your suggestions or they may not agree with your suggestions, but it's primarily the responsibility of the government to appoint a commission. I can't tell the government to appoint this one. I can certainly suggest that maybe this person may not be appropriate. Your lordships can yourself appoint the commission. Commission appoint हुई है, देखिए वो 2 किस्म के कमीशन होते हैं ना, एक होता है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, वो पावर उनका है, वो गवर्नमेंट का है, हमारा पावर है।
गवर्नमेंट का, एक आपका पावर है, आपकी पावर को एक्सरसाइज करें। और मैं इसमें जरा एक चीज जो मैंने सिविल सोसाइटी के मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट इफेक्टिव बंदे नॉमिनेट करने को कहा है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, द पाकिस्तान बार काउंसिल, presidents of the four provinces. Why? Sir, they are. अभी ये बाकी देखेंगे तो mix. Give me a reason. Reasons because they have an urge to pursue. They will. और हमारे बार एसोसिएशन में हर साल इलेक्शन हो जाता है, तो नया बंदा आएगा, कोई हमारा नया मैंडेट लेके ये एक रोस्टर ऑफ द बार इलेक्शंस कंपटीशन में हो जाएगा। अरे वो आने देना, उनके कमेंट्स आते हैं, अगर सिविल सोसाइटी को वो ऐड करना वो तो उनका काम है, नॉमिनेट करना और इसको नोटिफाई करना ना। जी सर, चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, आप ये दो देखें, डायरेक्टर जनरल sorry to interrupt. ISI. एक second. Sorry to interrupt you. I was just given a note. There's a Judicial Commission of Pakistan meeting for Peshawar High Court judges. जो scheduled at 3 o'clock. ठीक है सर, ठीक है सर। We don't want to. We are taking this case seriously. ये हम इसको कल फुल कोर्ट तो नहीं, वो बेंच तो नहीं, 11 बजे लार्जर बेंच है। PFUJ को भी मैंने इसमें, PFUJ and two senior officers, senior most officers of the inter-services intelligence and the IB. वो तो आप रिकॉन्स्टिट्यूट करने की बात करें ना, कमीशन, वो लेट द अटॉर्नी जनरल टेक सम इंस्ट्रक्शंस एंड उसमें देख सकते हैं, अगर वो नोटिफाई करें। अटॉर्नी जनरल आप ऐसा करें, आज we'll just treat it today as part heard, but you just make a note of the things that we want you to do, come back with. Monday को हमने भी कोई रखा ना केस, क्या रखा था? Sir, I'm appearing for the respondent in two of CPLAs that were filed by the government. एक मिनट, सलाउद्दीन होल्ड, थोड़ा सा रुक जाइए। मंडे को कुछ और है? There is presidential reference on Monday. ट्यूसडे को क्या? बेंच कंटिन्यू कर दी तो ट्यूसडे को कर देंगे। उससे भी नहीं पता हम चाहते हैं, ठीक है। आप कहाँ जा रहे हो? छोड़ना चाहते हो? कमाल। अच्छा, आप ऐसा करें, come up with some practical suggestions. Talk to Mr. Faisal Siddiqui. Take these production orders. बल्कि हम ऑर्डर डिक्लेयर ही कर देते हैं, लिखें। सॉरी सलाउद्दीन साहब, आप इस केस में? Sir, I am in CPLA 1503 and 1504. I am appearing for the respondent. The government had filed an appeal against orders regarding the students passed by the Islamabad High Court. I was informed that the government no longer wishes to press. जी सलाउद्दीन साहब, हमने विड्रॉ कर ली। These appeal have been withdrawn. अच्छा, ये बताइए, वो जो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसने क्या काम किया? वो ऑर्डर रिव्यू हो गया क्या बाद में? That commission headed by Mr. Akhtar Mangal had furnished its report. The commission was constituted. नहीं, it was headed by क्या नाम है, सादिक संजरानी? नहीं सर, Mr. Akhtar Mangal ultimately headed it. Mr. Sanjani refused to head it. उसने कुछ किया या नहीं किया? नहीं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट एक फर्निश की है सर। वो किधर है? Sir, I'll place it on record. It is before the Islamabad High Court. अच्छा, The report was furnished and it is on इसमें record. लिखिए, वो ऑफिस कौन है, स्टेनो कहाँ है? ये रिकॉर्ड कर रहे, ठीक है। ये आपकी नंबर, उसको नंबर कर देते हैं, इत्तेजाज एहसन फेडरेट, आपकी एक है 161 है, और यही है ना? उनकी है, खुशदिल खान की है 124। सबसे पहला केस तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं, ये क्या कह रहे हैं, विड्रॉ करना चाह रहे हैं। अच्छा, और ये इनकी अपील है खुशदिल खान की। इनका तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कहना चाहना है। ये तो इनकी आपको अगले दिन सुना था, इनकी तो कुछ जाती मसले हैं।
लेकिन हम ज़ाती मसले नहीं सुनेंगे इस केस में। ये आते हैं, बताइए। तो हम ट्यूसडे को इसको रखेंगे and we want you to, we will direct this commission to provide you with the information and you can seek any further information from them, what became of the production orders, and they have to submit a comprehensive report. My Lord, if maybe given a little more time, because if they can share the production orders with me, let's say by tomorrow or day after, it might need a few days to get the report from the concerned agencies on each of the production orders. As I understand, there are about 700 of those. Over 700 of those, so it might require a little more time. CM appeal. All these matters pertain to, shall we keep your matters pending or shall we, आपकी भी 3 है ना, 1 2 3 जी my lord, ये withdraw कर 4 जी my lord, withdraw कर ले। नहीं, इनसे पूछना अटॉर्नी जनरल से। जी my lord, the instructions are to withdraw them, sir. The government of Pakistan, which means that the orders will revive. My lord, the orders were complied with. The Islamabad High Court's order, on the basis of which the commission was constituted, that commission was constituted. The commission has furnished its report. So these petitions have become infructuous. 1503, 1504, 1505 and 4333, नहीं वो उन 3 का लिखें 2022, CPLA 4333 2021, पहले वो वाला लिख दें 2021 का। Learned Attorney General states that he is under instructions that through these CPLAs, orders passed by the Islamabad High Court were assailed. Full stop. Learned Attorney General states that he is under instructions to withdraw these petitions. Full stop. And further states that the orders have been implemented, and further states that the orders impugned therein have been implemented, and that he will be filing a concise statement in this regard. Full stop. Accordingly, these petitions are dismissed as withdrawn. However, Learned Attorney General to file concise statement as stated. Next paragraph लिखिए। ये इनका पहले लिखें। मेरे ख्याल में अब ये जो इनका नाम है, आमना जंजुआ साहब का पहले, आमना मसूद जंजुआ साहिबा का नाम लिखें। मिस लिखें या मिसेस लिखें आपके लिए, या मौसमात लिखें? MRS, ओके, MRS आमना मसूद जंजुआ एक केस में लिख दें। states that her husband, Mr. Masood Janjua, was disappeared on 30th July 2005 when he was to travel from Rawalpindi to Peshawar. Yes, my lord. And has not been heard ever since. And that my lord, it's and that she is not, and that she had approached the commission, क्या नाम है इसका? Commission on Enforced Disappearances. Commission of Inquiry on Enforced Disappearances. Commission of Inquiry on Enforced Disappearances. किधर था अभी पेज आपने बताया था? नोटिफिकेशन पेज बताया था ना, 220 क्या था? 131. आपने किसी ने बताया था? 131. हाँ? 131. 131.
वो तो law है हाँ ठीक है had approached the Commission of Inquiry with an E on enforced capital E capital D disappearances, which was notified by the government of Pakistan, by the federal government, but is not satisfied with the working of the commission. Full stop. Others present. The commission comprises of, we are informed that the commission comprises of the following: Mohammad Sharif Virk, the chairperson is Javed Iqbal sahab. Yes, ma'am. The chairperson of the commission is Mr. Justice retired Javed Iqbal, Mr. Justice retired Amanullah Yasin Zai, Mr. Justice retired Zia Parvez, and Mr. Mohammad Sharif Virk. As member, वो members लिख दीजिएगा, उनका chairman लिख दीजिएगा. And however, she is not satisfied with the working of the commission. The other petitioners too have expressed their reservations about the effectiveness of the commission. ब्रैकेट में उसको एक दफा कमीशन करके ब्रैकेट में उसको कमीशन कर दीजिएगा, ठीक है, उसके ब्रैकेट में कमीशन. मिस्टर खालिद नसीम, आप सेक्रेटरी हैं, रजिस्ट्रार हैं? रजिस्ट्रार सर. Registrar of the commission, however, states that the commission has done considerable work and a number of persons, and due to its workings, a number of persons have been recovered / returned home. Full stop. इनका लिखने civil miscellaneous appeal number 161/2023. The registrar of the Supreme Court had raised objections on the maintainability of a constitutional petition filed by Mr. Aijaz Hassan. Full stop. The petition refers to petition also attends to the matter of missing persons. Full stop. As we have already taken notice of the petition filed by Mrs. Amna Masood Janjua, and to the extent that the petition filed by Mr. Aijaz Hassan attends to the case of missing persons, the office objection overruled. Let the office is directed to number the petition. इनका खुशनी खान का करेंगे ना तो गाड़ी कर देंगे ना, सुन के उसी ये करेंगे तो अभी नंबर कर देंगे उसको लाओ उसी का रखें, नंबर करेंगे तो फिर जनरेटी का इशू है ना, मैंने तो उसको उसी बुनियाद पर लाएंगे ना, जब तुम्हारे पर्सनल इशू है मिस्टेबल नहीं था उसको दिन समझेंगे कि पर्सन मेंटेनेबिलिटी नहीं होता. देख लो. अच्छा ठीक है, तो अच्छा फुल स्टॉप. The Secretary of the Commission. Similarly, another petition has been filed by Mr. Khushdil Khan Malik, but the same was also but in respect of the same, office objection was also raised, and he has filed CM appeal number 124/2022, which has raised a number of issues. However, we restrict the matter to the case of missing persons and if the other grievances raised therein, some of which are personal, will not be attended to. Full stop. And the office is subject to our observations in this regard. Aijaz साहब, और आपका भी यही होगा.
वो वाले केसेस हम नहीं अटेंड करेंगे। missing/enforced नहीं, वो वाले केसेस जो है ना वो हम नहीं अटेंड करेंगे, आपको बता रहे हैं अभी से। हम मिसिंग पर्सन पे फोकस कर रहे हैं, इनका भी लिख दें टू बी नंबर्ड। That is not, as I submitted, that is not just an individual case or individual cases. They set and establish a pattern, and that pattern is the one that your lordship has to address. It's similar fact evidence. साहब देखिए ना, आई नो, देखिए आई एम वेरी cognizant of our jurisdiction. We are exercising jurisdiction, habeas corpus jurisdiction. If a person comes home, habeas corpus finishes, then you देखिए एक सेकंड ठहर जाइए ना, that doesn't mean you don't have a remedy. Then your remedy can be a criminal case, your remedy can be tort, your remedy can be sued for damages, but the Supreme Court's powers end on habeas corpus, the same power Supreme Court exercises as in under Article 199. So the person comes home, who picked him up, what comes up, that person is at liberty to go and do whatever he wants to. But our job ends there, and we will certainly not hear you in respect of those who are not even before us. हम चाहते नहीं है ये सारा लिखें, अगर आप चाहते हैं हम लिख देंगे। देखिए उनको भी हमने खुशदिल खान को भी रोक दिया है और हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं एक इशू पे। अगर देखिए अगर हम इतना डाइल्यूट करेंगे तो हम ये काम भी नहीं कर पाएंगे और कोई और काम भी नहीं कर पाएंगे। तो फोकस हम यही रखेंगे। ब्रॉड स्कोप है, अगर आप इससे मुतमईन नहीं, हम आपको रोकना नहीं चाह रहे, फिर हम आपका नंबर नहीं डालते हैं आज, फिर हम आपको लंबी तक सुनेंगे, फिर फैसला करेंगे। मैं क्योंकि अर्ज कर रहा हूँ, हमारी मीटिंग है जी सर, तो आप करिए अर्ज। जनाब फरमाते हैं तो मीटिंग नहीं होती, मेरे होते मुझे नेक्स्ट डेट पे 2 जुमले तो अर्ज कर लें। चले करिए। मेरा जो मामला है ये इंडिविजुअल या हेबस कॉर्पस का नहीं है, ये आपको बताना है एक पैटर्न नया शुरू हो गया है ऑफ कमिटिंग अ क्राइम विच यू आर कंसर्न्ड विद इन द ब्रॉडर पिटिशन। ये एक पैटर्न को, एक डिजाइन को एड्रेस करता है। दीज इंडिविजुअल्स एज सच डोंट मैटर कि कोई उनमें ये डार था या कोई फरक हबीब था या कोई, इट इज द new mode of tackling. What basis are you saying this? Sir, वो मैंने example दिए। Are you dar? No. Are you his lawyer? No. I am then here. On what basis are you saying it? In public interest. No. In public interest. 4 लोगों के नाम पब्लिक इंटरेस्ट में आ गए। सर 4 लोगों के नहीं है ये। 4 लोगों के आपने नाम लिखे। 4 लोगों के नहीं, वो 4 से ज्यादा है वैसे, but they establish a pattern. 4 people. Of very not 4 sir, there are more than 4. आप पढ़ लेते हैं अभी आगे पढ़ लें। आजम और भट्टी 2 तो यही है। Ask the Attorney General to seek proper instructions, and he has already given a statement that let him take the instructions and submit the report on which whether the persons are being arrested or not in accordance with the law or without due process of law or against Article 4 of the Constitution. वो तो दूसरे केस में हमने किया है। नहीं, वो तो दूसरे केस में किया है। नहीं, मेरे केस में भी ये रिपोर्ट दे दे। वो दूसरा केस था, वो तो वो वाला था, वो कंटेम्प्ट वाला। इसमें तो नहीं किया, दूसरे केस में। My lord, it was in this case. हाँ? It was in this case. इसी में ही था। नहीं, वो वाला केस, वो जो कंटेम्प्ट वाला था। नहीं, इसी नोटिस हो गया ना वो। हाँ? इसी में था। इसी बलोच मिसिंग पर्सन। लॉन्ग डे, बट वो ये पेज 6 पे बलोच मिसिंग पर्सन। चलिए हम ये बात भी देखते हैं। अच्छा, वो और क्या रह गया था? दी कमीशन इज डायरेक्टेड टू सबमिट comprehensive report should and provide copy of the same to the learned Attorney General, including all production orders issued by it, and the learned Attorney General to submit report if the said production orders have been complied with, and if not, why not. ठीक है?
फिर हम बाकी चीज़ें बाद में कर लेंगे। कमीशन हमारा हो रहा है 3 बजे से, आप भी तो उसमें आ रहे हैं ना हमारे सामने। कुछ बातें रह गई हैं तो हम इसको बताएं, कितना टाइम दें आपको? क्योंकि फिर आप देख लीजिए इनकी कुछ एंग्जाइटी और कमीशन वगैरह आप देख लें, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द कमीशन और नॉट, वो जब रिपोर्ट आपको देंगे उससे बातें आपके जहन में आ जाएंगी, फिर आप क्या करना चाहते हैं। तो कोई आप हमें डेट सजेस्ट कर दें। तो अब एक इनसे पूछते हैं। दूसरी बात, एक हमने जो नोटिस ली थी मगर इन्होंने कहा था, मगर इन्होंने दे नॉट कंसर्न विद दैट, सॉरी बुरा ना माने शोएब साहिन साहब, हमने कहा था जी यहाँ से जो लोगों को उठाया गया था, उन्होंने कहा मैं ला रहा हूँ पिटिशन, मैं अमेंड कर रहा हूँ इसको। उन्होंने ना लाए पिटिशन और ना अमेंड किए। अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये उनका बुनियादी हकूक है, अगर वो कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं वो एक अलग बात होती है। ये नहीं कि उनको धक्के मार से डंडे मार से उनको उठाया जाए। नहीं, उनको बहुत रुस्वा कर रहे हैं, बहुत रुस्वा किया है। एक सेकंड सर, आपने तो नहीं लिया है ना, इन्होंने वादा किया था वो करेंगे, नहीं किया उन्होंने पूरा वादा। हम अब अपने तौर पे कर रहे हैं। वी डोंट वांट दिस सॉर्ट ऑफ टैक्टिक्स employed by a responsible state. If someone wants to protest, let them protest to their heart's content. But you cannot just bundle, unless they are taking the law into their own hands, destroying public property or doing something violent. They have a right to protest. That right to protest must not be in any manner curtailed, let alone by force. Absolutely. ठीक है, that's the fundamental right. We may just add things in the thing. So now we have to go to the commission. Now we just propose a date. How much time do you want? No, my lord, if you we can we appoint Mr. Faisal Siddiqui as amicus in this case? My lord, of course. Huh? Of course. Mr. Faisal Siddiqui? Always. You're already appearing for someone or not? No, I'm amicus in all these missing person cases before the Islamabad High Court. That is why I had this. The amicus has to foot his own bill. ये बलोच जो यहाँ आए हुए हैं ना जी, जस्ट मैंने विजिट किया सर, इट इज अ पैथेटिक स्टेट ऑफ रात को तकरीर ना करें, कागज का टुकड़ा लाइए, फाइल कीजिए पिटिशन। वो मिस्टर फैसल सिद्दीकी एडवोकेट who is present in court and has rendered assistance is appointed as amicus to assist with the case. Whenever this case is fixed, his travel and staying costs will be borne by the government of Pakistan. Travel and staying costs, that's all. No fees. अच्छा, इसमें ये डेट कौन सी दे रहे हैं? ये बताइए अटॉर्नी जनरल, what will be a reasonable time? My lord, if the commission can give. हाँ, ये आपको देंगे, कितने दिन में आप दे सकते हैं पहले बताएं। इनको ये पूछ लेते हैं इनसे। खालिद साहब, आप कितने दिन में इनको दे सकते हैं? ताकि वहाँ खालिद साहब, कितने दिन में आप इनको दे सकते हैं? कुछ आइडिया दे दें, टाइम दे दें 2-3 हफ्ते। भाई आपको कितने दिन में इनको कम से कम 3 हफ्ते दे दें, क्योंकि हमारा स्टाफ है नहीं। बात कर रहे हैं यार, एक रिपोर्ट भी नहीं है हमारे पास ना। नहीं 2-3 हफ्ते में क्या है, एक हफ्ते का काम है, 8-10 दिन में कर ले, 8-10 दिन मैक्सिमम। कितने सर, कितना टाइम? 10 days, 10 to 15 days देते फिर सर। 10 to 15 within 10 days। ठीक सर, ये 10 days में आपको देंगे, फिर आप कितना टाइम लेंगे? So if they can share production orders in, let's say, within 10 days। share production orders जल्दी share कर ले। रिपोर्ट इन्होंने 10 दिन में देनी है, प्रोडक्शन ऑर्डर्स 2 दिन में आ जाएंगे। आप हमें the case can be listed, let's say, after 2 weeks। 10 days के बाद 2 weeks? No, 2 weeks from now। ठीक है, फिर हम डेट तक लिख लेंगे, अपना जरा देख लेंगे कोई प्रोडक्शन ऑर्डर्स मैं इनसे ले लूंगा, 2 हफ्ते मेरे Preferably, Mr. Faisal Siddiqui, If your lordship may just mention that the report which is to be submitted before this court on production orders must be on each of the cases. Yes, ये yes. कोई general report No, ना we हो। don't want numbers। ये हमें, आप हमें नाम देंगे सबके, बल्कि इनको देंगे ना। सर एक गुजारिश और है सिर्फ जी। वो ये है, वो फखरुद्दीन जी इब्राहिम का करते थे कि मंडे अगर फिक्स करने लगते थे कोर्ट, तो वो कहते थे मंडे ना ट्यूसडे का। उनसे पूछते थे जब जज साहबान कि व्हाई नॉट मंडे, तो वो कहते थे केस तो पता नहीं चले ना चले, पर संडे खराब हो जाएगा, तो ट्यूसडे। ऐसे ये बताइए एतजाज साहब, आप हमारे सामने कभी आए और आपका केस ना चला हो? नहीं। एक एग्जांपल देते हैं। नहीं,
अगर नहीं चला तो आपकी अटेंडमेंट की दरखास्त आई हुई होगी। हमारी तरफ से हम पूरा बोर्ड खत्म करके जाते हैं। अब आप देख लें 3:30 बजे हैं, ठीक है। अगर आज हम आपको देर तक सुनते हैं, मगर आज हमारी JCP की मीटिंग है, Very grateful वो to 3 you. बजे रखी हुई Very है। grateful. Otherwise we try to finish the board, at least I try to humanly possible. One of our colleagues is not well. She is seriously unwell and she's come and sat in court. मतलब बलोच प्रोटेस्ट के बारे में सिर्फ एक बात करनी थी, बलोच प्रोटेस्ट के बारे में मतलब सिर्फ एक बलोच प्रोटेस्ट के बारे में, प्रोटेस्टर्स के बारे में बात करनी थी। उन्होंने ये कहा कि जी जो पिटीशन पेंडिंग है हमारी वही रिक्वेस्ट करें। आपने कुछ नहीं फाइल किया, मगर हमने अटॉर्नी जनरल को ऑलरेडी कर दिया है। ही इज सो फार रिस्पॉन्स। हर प्रॉब्लम के हल की डिलीवरी नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, फूड पैंडा संभाल लेगा।